Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics X. Today we will discuss practice set 3 data based question. So guys, let's start. Heightened uncertainty caused by the COVID-19 pandemic led to surge in currency in circulation as people hoard cash and park money in accessible deposits to safeguard themselves against salary cuts or job losses. According to RBI data, M3 money supply rose 6.7% in the first 5 months compared with the same period of last year, the highest growth in 7 years. Answer the following question. 1. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time, total volume of money held by public over a period of time, total volume of money held by government, both A and B. So correct answer is option A, total volume of money held by public at a particular point of time. Second, money supply is a concept. Stock, flow, both A and B, neither A nor B. So correct answer is option A, stock. Money supply is a stock concept. 3. Which is the most liquid measure of money supply? M1, M2, M3, M4. मोस्ट लिक्विड मेजर मीन्स जहां करेंसी और असेस्ट दोनों इंक्लूड होता है. करेंसी एंड असेस्ट दोनों जो इंक्लूड होता है वो होता है M1 में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. What items are not included in M3 measure of supply? Currency and coins with the public, net demand deposits with the bank, interbank deposits, total deposits with post office saving bank. जो M3 होता है उसमें जो इंक्लूड करते हैं वो होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, और जो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है वो M3 में इंक्लूड नहीं होता, M4 में इंक्लूड करते हैं हम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The RBI's Monetary Policy Committee (MPC) made unanimous decision to maintain a status quo after a 3-day meeting that began on December 2nd, 2020. The reverse repo rate also remains steady at 3.35%. According to following questions, what will the impact of money supply if RBI decides to decrease the repo rate? रेपो रेट अभी जो हमारा करंट में है वो कितना है 4%. तब आरबीआई डिसाइड कर लेती है रेपो रेट को डिक्रीज करने के लिए, तो जो हमारा मनी सप्लाई वो क्या होता है इंक्रीज होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक. जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से बोरो करती है उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. अभी करंट में हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%. Which bank controls the banking and monetary structure of India? Reserve Bank of India, World Bank, State Bank of India, Axis Bank. So correct answer is option A, Reserve Bank of India. Which of the following is not a method of credit control? जो क्रेडिट कंट्रोल होता है इसके दो मेथड होते हैं. क्वालिटेटिव जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव मेथड, क्वांटिटेटिव जिसको हम बोलते हैं जर्नल मेथड. जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये इंक्लूड होता है, और जो सेलेक्टिव मेथड होता है उसमें क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये हम इंक्लूड करते हैं. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट ये हमारी क्रेडिट कंट्रोल के मेथड हैं, हम कंसिडर करते हैं. बट ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये हमारा क्रेडिट कंट्रोल का मेथड नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Next question. The government had sharply raised the fiscal deficit target of financial year 2022 in the budget presented on February 1st as the COVID-19 pandemic dented revenues and expenditure ballooned to contain its impact. According to following question, 1. Interest payments are subtracted from this deficit to arrive at primary deficit. Option revenue deficit, capital deficits, fiscal deficit, none of these. So correct answer is option C.
और हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट है अभी करंट में वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, revenue deficit, fiscal deficit, secondary. So correct answer is option C, fiscal. Next, if estimated government receipts are more than estimated government expenditure, it is said to be a balanced budget, deficit budget, surplus budget, none of these. So correct answer is deficit budget. While financing deficit, under which measure government print more currency? Deficit financing, disinvestment by issuing bonds, none of these. So correct answer is option A, deficit financing. Next question. Rupee appreciates over 4% against dollar so far in 2022, 2020, 2021. The rupee is likely to average around 73.50 to 74 in the financial year 2021 to 2022, as despite a vaccine, the coronavirus hysteria still persists and may continue to grapple the foreign exchange market. According to following question, 1. In case of appreciation, more rupees will have to be paid to exchange $1. So correct answer is option B, false. Appreciation of domestic currency leads to rise in exports, imports, both A and B, neither A nor B. So correct answer is option B, imports. Considering the above, what will the impact on demand for American goods in India? Choose the correct alternatives. Demand will rise, demand will fall, no impact, none of these. Correct answer is option A, demand will rise. An increase in demand for imported goods, the demand for foreign exchange. Increase, decrease, does not change, can't say. So correct answer is option A, increase. Next question. India's cotton exports likely to rise 50% this year to 75 lakh bales this year. Cotton exports from India are likely to rise 50% this year to 75 lakh bales in the 2020-2021 crop year beginning October with revival in global demand from China and Bangladesh in the last 1 month, said trade bodies. According to following question, the above transaction will be recorded in account, current account, capital account, both A and B, neither A nor B. So correct answer is option A. जितनी भी हमारी करंट अकाउंट में जितने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फैक्टर इनकम होती हैं, कैश ट्रांसफर्स होते हैं, वो सारे हमारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट, द अबव ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ऑन साइड ऑफ BOP, डेबिट एंड क्रेडिट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेडिट. जितनी भी हमारी करंट अकाउंट BOP में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो क्रेडिट साइड होती हैं. Export of cotton will be identified as visible trade, invisible trade, one side transaction, unrequited transaction. जो visible trade होता है उसमें जितनी भी गुड्स होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं. इनविजिबल ट्रेड मतलब जितनी भी सर्विसेज रिकॉर्ड किए जाती हैं. तो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ए. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विजिबल ट्रेड. The above transaction will have a effect on income, output and employment of the country, direct and indirect. तो इस पे हमारा जो इफेक्ट होगा वो होगा डायरेक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो गाइज, थैंक यू सो मच